Good evening, dosto. Good evening, all. So let's begin with today's session. Look at the first question. So consider the following statements regarding the Aircraft Accident Investigation Bureau. The first statement says that it regulates aviation safety standards. No, this statement is incorrect. Why? Because the aviation safety standards are regulated by the DGCA, the Director General of Civil Aviation, and not by the AAIB. See, the role of the AAIB is limited to the air crash investigation, right? So the first statement is incorrect here. Second statement says it functions under the Ministry of Civil Aviation. This one is correct. The third statement says that it was set up as per the standards of the International Civil Aviation Organization and under the Chicago Convention. That is absolutely correct. So two statements are correct here. Question is, how many of these statements given above is oblique are correct? So only two statements are correct here. So B for Bombay would be the correct answer, right? And why we picked up this question? So there is a strong reason. See, recently, Supreme Court instructed AAIB to finish the Ahmedabad air crash probe within 3 weeks. It's already delayed, right? So Supreme Court is fixing a time frame. Understood? Chaliye, now let's move on to the next question. Consider the following statements regarding the privilege motion. The first statement says it is moved when a member of parliament feels that a parliamentary privilege has been breached. Absolutely correct. The second statement says that it can be raised only by the speaker of the Lok Sabha or the chairperson of the Rajya Sabha. No, that's not correct, right? यहाँ जो term है यहाँ पे only absolute term था. You have to be attentive when you see such absolute terms. So second statement is incorrect here. The third statement says if admitted, it may be referred to the Committee of Privileges for the examination. Absolutely correct. Do remember some facts and figures, right? First of all, do remember that Article 105 and Article 194 deals with the parliamentary and the legislative privileges respectively, right? So Article 105, it deals with the parliamentary privileges and Article 194 deals with the legislative privileges. In case of the legislative assembly, right? अगर कहीं यूनिकैमरल हाउस है या फिर अगर कहीं बायकैमरल हाउस है तो legislative assembly plus legislative council. Also remember that we can categorize the parliamentary privileges in two parts, the individual privileges and then the collective privileges. अब individual privileges के examples क्या हैं? For example, the right to freedom of speech and expression, and the second one is the freedom from arrest, right? So freedom from arrest and the freedom of speech and expression. Also remember the example of the collective privileges. So collective privileges may first of all to regulate the entry and exit, means parliament is the sovereign house, right? एंड द राइट टू पब्लिकेशन. तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको पब्लिक कर सकता है और उसको पब्लिक होने से रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है. अंडरस्टूड. Also remember that as per Article 122 and Article 212, the parliamentary proceedings cannot be challenged before the court of law, right? Similarly, as per Article 212, the proceedings of the Legislative Assembly and the Legislative Councils cannot be questioned before the court of law, right? And one more thing दोस्तों, यहाँ पे जिक्र हुआ है Committee of Privileges का. So do remember that the Committee of Privilege exists in both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The strength of the Lok Sabha committee is the Privileges Committee of Lok Sabha is 15 and the Rajya Sabha Privilege Committee is 10, right? So question is how many of these statements given above is oblique are correct? So two statements are correct here, 1 and 3. Second statement is incorrect here. So correct answer क्या होगा? B for Bombay would be the correct answer, right? Now look at the explanation part why we picked up this question. So there is a strong reason, as I said, that government to move privilege motion against Rahul Gandhi for misleading the house, says Union Minister Kiran Rijiju, right? Chaliye. Now let's move on to the next question. So look at the question number 3. Consider the following statements regarding the suspension of MPs under the rules of procedure and conduct of business of the Lok Sabha. सबसे पहले तो याद रखिए that as per Article 118, the Parliament has the right to frame rules and regulations for its own governance and administration, right? तो लोकसभा rules कहाँ से आए? As per Article 118. And what Article 122 says? It says that parliamentary proceedings cannot be challenged before the court of law, right? अब यहां ध्यान से देखिएगा. So लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के अपने अपने रूल्स हैं. So as per the rule number 373 of the Lok Sabha, the speaker can direct a disorderly member to withdraw for the remainder of the day's sitting. मतलब
अब आपको पता होना चाहिए कि जनरली हमारे पास कितने सेशंस होते हैं। इन जनरल हमारे पास 3 सेशंस हैं, बजट सेशन, देन मॉनसून सेशन एंड देन विंटर सेशन। लेट्स सपोज कि एक सेशन जो है उसकी लेंथ है 30 डेज की, राइट। तो जैसे सेशन आज शुरू हुआ और अगर आज जो फर्स्ट डे है वहां पे अगर कोई डिसऑर्डरली मेंबर है तो स्पीकर जो है वो क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं ऐसे मेंबर को फॉर दी लाइक रिमाइंडर ऑफ द टाइम पीरियड। तो आज बस के लिए यहां सिर्फ पर्टिकुलर डे की बात हो रही है एज पर दी रूल नंबर 373, राइट। सो जो डे सिटिंग है उस डे सिटिंग तक के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता है। Look at the second statement. Under the Rule 374, a member named by the Speaker can be suspended for a period not exceeding the remainder of the session. अब let's assume कि बजट सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। अब बजट सेशन में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। कितने दिन? सिर्फ 10 डेज आर लेफ्ट। अब क्योंकि सिर्फ 10 डेज बाकी हैं तो यहां अगर उस मेंबर का सस्पेंशन होता है तो सिर्फ कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकता है? फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो 10 दिन बचे हैं सेशन को फिनिश होने में, तो आप सिर्फ मैक्स 10 डेज के लिए कर सकते हो ये सस्पेंशन, उसके बियॉन्ड इन्फोर्सिबल नहीं होगा, राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। Look at the third statement. Under the Rule 374A, a member is automatically suspended for 10 consecutive sittings or the remainder of the session, whichever is less. ये 10 consecutive sessions नहीं है. As per the Rule 374A, ये 5 consecutive sessions हैं, not the 10 consecutive sessions, right? Now try to understand this. See, let's assume कि इस session में यहां पे आपके पास में 10 डेज बचे हुए हैं अगेन, राइट। और आज अगर स्पीकर अगर आज इन्वोक करते हैं रूल नंबर 374A अगेंस्ट, लेट्स सपोज कि अगेंस्ट 5 मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, तो अगर ऐसा वो करते भी हैं तो सिर्फ कितने डेज के लिए कर सकते हैं? या तो 5 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस के लिए कर सकते हैं, राइट। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग्स के लिए किया जा सकता है या फिर रिमाइंडर ऑफ द सेशंस के लिए। अब लेट्स अज्यूम कि भाई 5 दिन ही बचे होते या 4 ही दिन बचे होते तो सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2, राइट। सो बी फॉर बॉम्बे वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। I hope you guys understood why we picked up this question. So again reason same है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक जैम ओवर दी राहुल गांधी स्पीच लीड्स टू लोकसभा फेस ऑफ 8 MP सस्पेंडेड, राइट। तो आपको पता होना चाहिए रूल नंबर 374 एंड रूल नंबर 374A ऑटोमेटिक सस्पेंशन। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. Consider the following. It is an all-women committee of the 3 retired High Court judges. It was appointed by the Supreme Court in August 2023 to supervise the relief, rehabilitation, and restoration in the violence-affected Manipur. It conducts the criminal investigations related to the Manipur violence. Which of the following committees is described above? That is Justice Geeta Mittal Committee, right? So B for Bombay would be the correct answer here. So you can see the explanation part. So Supreme Court extends the tenure of the Justice Geeta Mittal Committee formed to provide healing touch in Manipur, right? चलिए now let's move on to the next question. कई बार इस तरह के सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी यूपीएससी में आते हैं. So look at the next question. The general purpose AI code of practice often seen in news has been released by which of the following organizations? That is nothing but the European Union. So C for Calcutta would be the correct answer here. Right now, why we picked up this question? So there is a strong reason again. Recently an article was published in the Hindu, right? So you can see here that European Union unveils AI code of practice to help businesses comply with the bloc's rules, right? So general purpose AI code of practice has been released by the European Commission as part of the implementation of the European Union Artificial Intelligence Act. It provides voluntary guidelines for the developers of the general purpose AI models to ensure the transparency, safety, and compliance within the European Union norms, right? So now let's move on to the next question. Which of the following organizations has recently published the report titled State Trends of Carbon Pricing 2025? This report was recently published by World Bank, right? So World Bank group के अंदर जो 2 organizations हैं, first one the International Development Agency IDA and the International Bank for Reconstruction and Development IBRD. They are collectively known as World Bank, right? And World Bank and IMF, the International Monetary Fund, that's the product of the Bretton Woods Conference, which was conducted in 1944, where in
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप यहाँ रीजन देख सकते हैं, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, कंट्रीज इंक्रीजिंगली एम्ब्रेसिंग कार्बन प्राइसिंग टू ड्राइव एमिशन रिडक्शन, रेज रेवेन्यू। सो वर्ल्ड बैंक सेज इन दिस, said in this report, right? चलिए, now let's move on to the next question. So look at the question number 7. Consider the following statements. The first statement says the tardigrades are among the most resilient animals and can survive the extreme conditions such as exposure to the outer space. Absolutely correct. The second statement says tardigrades are able to manifest the process of cryptobiosis and hydrobiosis very efficiently. Absolutely correct. In fact, the second statement is giving the justification of the statement number 1. Why? Because tardigrades have these properties. Which one? The cryptobiosis and this one, right? So they have the property to accommodate in the extreme atmosphere. For example, extreme radiation, तो चाहे radiation हो या फिर dehydration हो, राइट या फिर ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो, तो किसी भी तरह की कोई भी एक्सट्रीम कंडीशंस होगी, तो उन एक्सट्रीम कंडीशंस को बेयर करने की जो प्रॉपर्टीज हैं वो टार्डिग्रेड्स में है, और इन प्रॉपर्टीज को व्हाट वी कॉल इट द क्रिप्टोबायोसिस एंड एनहाइड्रोबायोसिस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट इज गिविंग द जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 1. So, which of the following is correct in respect of the above statements? Correct answer would be A for Ahmedabad. Both these statements are correct, and the statement number 2 is the correct explanation for the statement number 1. Right? Now, look at the explanation part. Why we picked up this question? So again, there is a strong reason. Recently, an article was published in BBC. So, harnessing the superpower of the most resilient life form on the Earth. See. They can survive in extreme temperatures near absolute 0 to 150 degrees Celsius, high radiation, vacuum of space, high pressure and dehydration. तो किसी भी सिचुएशन में ये सर्वाइव करना जानते हैं, राइट? चलो दोस्तों, चलते हैं आगे. So look at the question number 8. Consider the following statements. The first statement says the chief election commissioner can be removed from the office in like manner and on the like grounds as the judges of the Supreme Court. Absolutely correct. Which are the two grounds? The grounds are proved misbehavior and the misconduct. ये बात अलग है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन दोनों की डेफिनेशंस कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ना ही प्रूव्ड मिसबिहेवियर की और ना ही मिसकॉन्डक्ट की, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट इज any other election commissioner shall not be removed from the office except on the recommendation of the President of India. This statement is incorrect here. See, always remember, the Election Commission of India is a multi-member body. So 3 members are there, right? Including the Chief Election Commissioner. So Chief Election Commissioner and then the Election Commissioner 1 and then the Election Commissioner 2. Do remember that only the CEC enjoys the constitutional protection. राइट, जॉब गारंटी सिर्फ इन्हीं को है और इनको सिर्फ और सिर्फ प्रूव मिसबिहेवियर और मिसकॉन्डक्ट के ग्राउंड पे ही रिमूव किया जा सकता है, सिमिलर टू द ग्राउंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस. लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, इनको सिंपल ग्राउंड्स पे भी रिमूव किया जा सकता है, जैसे करप्शन का ग्राउंड हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? Except on the recommendation of the President of India. No, on the recommendation of the Chief Election Commissioner and by the President of India. So the second statement is incorrect here. The third statement says the CEC and the election commissioners are appointed by the President of India, correct, upon the recommendation of a high-level committee, 3-member committee, comprising the Prime Minister, Leader of Opposition, and 1 member from the Union Cabinet. Absolutely correct, right? So ये सिलेक्शन कमिटी है, याद रखिएगा. सिलेक्शन कमिटी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा. उस केस में अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द ऑपोजिशन, राइट, प्लस 1 member नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो 2 statements are correct here. Which one? The first statement, या मैंने गलती से क्रॉस का साइन लगा दिया, सो जस्ट अ मोमेंट. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ग्राउंड्स क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड मिसकॉन्डक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हियर. व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट वुड बी ओनली 1 and 3. सो डी फॉर दिल्ली वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट. अब सवाल ये कि हमने क्यों क्वेश्चन को पिक किया. आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ पे ममता बनर्जी जो है, उनका एक स्टेटमेंट आया था वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर का, दैट विल बैक एनी मोशन बाय ऑपोजिशन टू इम्पीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, राइट. सो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पिक किया है.
चलिए, एंड डू रिमेंबर जो हमने अभी सिलेक्शन कमेटी का जिक्र किया है, ये सिलेक्शन कमेटी जो है स्टैट्यूटरी कमेटी है, किस बेसिस पे बनी है? एज पर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ द ऑफिस एक्ट ऑफ 2023, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, the Sahyog portal was launched to. See, this portal was launched by the Ministry of Home Affairs to expedite the blocking of the objectionable content online under the IT Act of 2000 as per section 69A of the IT Act of 2000, right? याद रखिएगा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है? ये बेसिकली कहाँ आएगा? ये रेसिडरी सब्जेक्ट में आएगा. किसमें? रेसिड्यू में. रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? रेसिड्यू मीन्स बचा हुआ, लेफ्ट ओवर, राइट? सो ये रेसिडरी सब्जेक्ट में आता है, याद रखिएगा, विद इन दी 7th schedule. Now let's move on to the explanation part why we picked up this question. So you can see here, Sahyog portal was launched by the Ministry of Electronics and Information Technology to streamline and fast track coordination between the government agencies and social media platforms for issuing blocking orders, takedown of the illegal and the objectionable online content under section 69A of the IT Act. Clear? So I hope you guys understood. Doston, this is going to be the last question of today's session. So question number 10, with reference to the geography of Taiwan, consider the following statement. So Taiwan is also known as the Republic of China, right? Or mainland China, what we call it? We call it the People's Republic of China, right? So first statement says that the Bashi Channel separates Taiwan from Philippines. Absolutely correct. See, Bashi Channel is the part of the Luzon Strait. Which one? Luzon Strait within the Philippines Sea. So first statement is absolutely correct here. So look at the second statement. The Zuo Shui River is Taiwan's longest river. This is again correct. So question is, which of these statements given above is oblique are correct? So both these statements are correct here. C for Calcutta would be the correct answer. देखिए, एक बार आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिएगा प्लीज. सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो दिस इज ताइवान विद द कैपिटल ताइपे. एंड ताइवान के नॉर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है. यहाँ साउथ में आप देख सकते हैं ल्यूजॉन स्ट्रेट एंड फिलीपींस सी है. एंड बेसिकली बाशी चैनल किसका पार्ट है? ल्यूजॉन स्ट्रेट विद इन द फिलीपीन सी. वेस्टर्न एंड पे आप देख सकते हैं ताइवान स्ट्रेट है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. और यहाँ पे साउथ इन साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ चाइना सी है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैपिंग ऑफ ताइवान, राइट? चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में दोस्तों. उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन सेशंस को लाइक कर रहे हैं. प्लीज अपने फ्रेंड्स तक इन सेशंस को पहुंचाइए. एंड ऑल्सो रिमेंबर दोस्तों दैट यू हैव टू पुट द कमेंट्स. यू हैव टू मेक दी सेशंस एंगेजिंग. देखिए, इन सेशंस को एंगेजिंग बनाने का दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी नहीं है. अगर आपको इन सेशंस को एंगेजिंग बनाना है तो यू हैव टू इंडल्ज इन द डिस्कोर्स. सो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.